सारी rigid object क्यों होगा? Because it is going to have the fixed position of the constituent particles, and whatever the particles are present, they are going to oscillate at their own mean position. Then we discuss that there can be the two type of the forces. Two type of the forces may be discussed. That one force is the intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction are basically the binding forces, means because of these forces the different particles are going to make a bond, or you can say they are going to bind with each other. Second type of the force we studied was the thermal energy. Thermal energy may we discuss that as you are going to increase the temperature, molecules are going to attain the kinetic energy, and when they are going to attain the kinetic energy, there will be the change in the state of the your whatever the object is. Now in this case we say that any object is going to said as a solid if the intermolecular force are greater than the thermal energy, and any object is going to set as a liquid or the gases if intermolecular force is less than the thermal energy. Then we discuss the classification of the solids. In the case of classification of the solids, on the basis of the arrangement of constituent particles in the solid state. And there was the two types of the solids. The one was the crystalline, another one was the amorphous. Crystalline solids के अंदर the constituent particles they are going to arrange in a definite pattern. एक set pattern होगा जिसके अंदर they all are going to arrange. Therefore, crystalline solids are called as a larger ranges or long range order particle substances. Amorphous solids के केस में amorphous solids they are their constituent particles are going to arrange haphazardly, means there is not any set pattern to arrange them. Therefore they are going to called as a short range order. Okay, itna clear hai to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Then we started discussing about the difference between the crystalline solids and the amorphous solid. In the case of the differences, now first difference is what? Your crystalline solids are going to have the definite shape, and your amorphous solids are not going to have the definite shape. Then if we talk about the melting point, then whatever the crystalline solids, they all are going to melt at a sharp melting point, means whatever the solid is there, crystalline solid is there, उनका एक specific melting point होगा. Like ice का melting point होता है 0 degree Celsius. So ice is going to melt only at this temperature. But if we talk about the amorphous solids, तो amorphous solids जो हैं वो एकदम ही soften हो जाएंगे depending on their condition. There won't be any specific type of the specific temperature for them. So they are not going to have the specific temperature. Then if we are going to talk about the nature, the crystalline solids are going to called as the true solids, and your amorphous solids they are going to called as a pseudo solids or supercooled solids. What do you mean by the supercooled solids? Anyone? मैम लाइक ग्लास आती है सुपर कूल होता है मैम वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है मैम जो एकदम जमा दिया जाता है जैसे ग्लास होता है वो अपना सुपर कूल लिक्विड होता है लेकिन वो सॉलिड जैसा दिखता है. Anyone else? रूम टेम्परेचर पे जो फ्लो हो सके. आप ये कैसे, हाँ ये पॉइंट भी ठीक है. Anyone else?
बेसिकली क्या होता है कि जो आपके लिक्विड्स हो गए उनका चिलिंग प्रोसेस जो होता है बिलो एनी फ्रीजिंग पॉइंट, और वो तब तक सॉलिड भी नहीं बन पाते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड्स। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस करने से पहले एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड एज योर एनिसोट्रॉपी। ओके, नाउ व्हाट डज मींस एनिसोट्रॉपिक? हम ये कहते हैं कि व्हाटएवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन द नेचर। एनिसोट्रॉपिक इन द नेचर का मतलब क्या हो गया? I just show you one picture. Amorphous anisotropic. Wait. देखो, एनिसोट्रॉपिक इन द नेचर का मतलब क्या हो गया? इफ यू आर एबल टू लुक दिस पिक्चर ओवर हेयर, दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर, इसके अंदर whatever the crystals are there, they are arranged in a same pattern, same direction के अंदर अरेंज है। like if you are able to look these one darker ones और lighter one, किसी को भी आप कंसिडर करोगे, throughout the solid they are arranged in the same pattern. So these type of the crystals are going to exhibit the anisotropic or you can say anisotropic structure. जो amorphous हो गए, एमॉर्फस के केस में दे आर आइसोट्रॉपिक इन द नेचर। आइसोट्रॉपिक इन द नेचर का मतलब क्या होता है? दैट वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, दे आर नॉट अरेंज्ड इन द सेम पैटर्न, दे आर गोइंग टू हैव द irregular pattern. Okay, so this is the main difference between the two, that we say that whatever the crystalline solids, they are anisotropic in the nature, and your amorphous solids, they are isotropic in the nature. Okay, now for example, एक और example, if you look in your book there is given figure 1.2. उसमें क्या दे रखा है? that if you are having the bigger particles and at the same time you are having the smaller particles, then also they are arranged in the same pattern. If you are going to look, they are exhibiting the same patterns. Is that clear? What is anisotropic or isotropic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब जैसे अब मैंने आप लोगों से पूछा that what do you mean by the super cooled, तो many of you what did you told? You told me that मैम जैसे glass हो गया, glass is not a solid, glass is a super cooled liquid. glass को ही हम लोग pseudo solid भी बोलते हैं, and why it is called so? ग्लास को सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? उनका मैम उसकी जो वो होता है ना मैम फ्रीजिंग पॉइंट, उससे नीचे अपन उसको है ना वो कर देते हैं, मतलब लिक्विड में उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड में, मतलब होता है नेचर में। एनीथिंग एल्स? इसमें बेटा एक क्वेश्चन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, चाहे बुक में ही इटसेल्फ लिख लो। विंडोज ऑफ old buildings are invariably thicker at bottom. अब देखो विंडोज जो हो गई बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द ग्लास। ग्लास को हम स्यूडो सॉलिड बोल रहे हैं। ग्लास को हम स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? इफ यू लुक फॉर एग्जांपल दिस इज योर ग्लास विंडो, क्या होता है कि स्लोली धीरे धीरे क्या होता है कि इट स्टार्ट्स फ्लोइंग डाउन, धीरे धीरे वो फ्लो करना
शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब वो डाउन साइड ही फ्लो क्यों करता है? इट फ्लोज डाउन साइड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से इट स्टार्ट्स अपीयरिंग थिकर एट द बॉटम। नाउ we say that your liquids, another thing came that कि glasses को हम super cooled liquids क्यों बोलते हैं और pseudo solids क्यों बोलते हैं? because what is going to happen कि glass जो है धीरे धीरे नीचे flow down कर रहा है, but solids के केस में ऐसा तो होगा नहीं। that's why they are called as the super cooled liquids और pseudo solids। ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क में आता है that windows of old buildings are invariably thicker at the bottom। Write down its answer. As glass is pseudo-solid, as glass is pseudo-solid, slowly it starts flowing down due to gravitational force due to which it appears thicker at the bottom। Written beta this much? Yes, ma'am. Next question, write down. Why glass is called supercooled liquid? Why glass is called supercooled liquid? Write down its answer. Glass is called supercooled liquid because glass is an amorphous solid and we know that amorphous solids have tendency। मैम एक बार रिपीट कर दो। Okay beta. Glass is called supercooled liquid because glass is an amorphous solid and we know that amorphous solids have the tendency to flow but slowly। It do not form crystalline solid structure. It do not form crystalline solid structure as particles in solids do not move here and there। Okay, मैम लास्ट लाइन रिपीट कर दो। as particles move here and there। Question number 3. Why do crystalline solids are
anisotropic in nature and amorphous solids are isotropic in nature. Write down its answer. Anisotropy in crystals is due to different arrangement of particles along different directions. Full stop. And isotropic in amorphous solids is due to its long range order in them and arrangement is irregular along all the directions. लिख लिया इतना? Yes, ma'am. अब look over here, the two diagrams are showing over here. Anisotropy in the crystal and isotropy in the amorphous solids. If you look this direction, that is your direction B. If you are going to look this direction, direction B, तो यहाँ पे what is looking कि एक बड़ा particle है, एक छोटा particle है, then बड़ा, then छोटा. It means that there is the presence of the different sizes. Okay, but if you are looking this line, A line, over here all the particles are of the same size. A line अगर ये purple पे ना होके green पे होती, then also it would be a same size everywhere. So this type of the solid is going to called as a anisotropy, means the arrangement of particles along the different directions is going to be the different. But if you look isotropy, so whether you are looking this A direction or this direction you are looking, everywhere कहीं से कहीं पे भी you make your own direction, over here there is the perfect irregular pattern. एक उसका अपना irregular pattern है which is applicable throughout the crystal. So such type of the solids, amorphous solids, are going to exhibit the isotropy in the nature. Is that clear? Just take the screenshot of this and afterwards make it. Yes, ma'am. Take a screenshot of this, and this anisotropin crystal is shown in our book also. Isotropy. Take its screenshot. Done? Long range order, short range order बता दूँ.
बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि लॉन्ग रेंज उसे बोलेंगे कि दूर तक जो उसका पैटर्न है वो सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस इन द पैटर्न। शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि थोड़े डिस्टेंस तक ही, और इट इज लिमिटेड टू द फ्यू पार्टिकल्स ओनली, कि कुछ पार्टिकल्स का ही एक सेम पैटर्न है, दिन अगले कुछ का कुछ और सेम पैटर्न है, सो दैट टाइप is called as a short range order. Okay, is that clear? Okay, ma'am. Okay, now after this your fourth question comes, why milkiness appears in certain glass panes? Guess anyone? क्रिस्टलाइन नेचर के कारण। Yes, very good. It milkiness appears in the certain glass panes because of the crystallization of glasses in certain areas. पूरे glass में crystallization नहीं होता है, but कुछ areas पे their crystallization takes place. Therefore, they appear the milky in the nature. Now, these four questions, we can expect these four questions as a 1 marks. Secondly, your table 1.1, that is the difference between crystalline and amorphous solids. We can get the question from that difference also for the 2 marks. Mark them as a important. Now, anyone who can tell me what are the uses of amorphous solids? Where we can use the amorphous solids? Glass. Huh? ग्लास, प्लास्टिक्स। Yes, glass, plastics. Any other use? Rubber. Like, yes. Now, we all are familiar with the word silica. Yes. This silica, it is used as one of the major product when we create a solar panels. And solar panels, you know, they are having a very big so you can write down its use. This of getting the sunlight into the electricity, amorphous solids are used. This much is clear to everyone? Now, again, 1 marks question is over here. ये questions लिखते रहना बेटा साथ साथ. What is the best photovoltaic material for conversion of sunlight into electricity? Its answer, what will be its answer? सिलिका। Yes. So you are going to write down over here as a amorphous
चलेगा। यहाँ तक this unit, I hope there won't be any problem. Yes. Now the next topic in this starts the classification of crystalline solids. Like when we are talking about the crystalline solids, we say that these crystalline solids are classified on the basis of nature of intermolecular force. Basically we say that कोई भी crystalline solids है, so it means that there is existing the intermolecular force. So what type of intermolecular force is going to exist inside the solid? These crystalline solids are classified, and they are classified as the molecular, ionic, metallic, and covalent solids. Now molecular solids are what? We say in the case of the molecular solids, your molecules are the constituent particles in the case of molecular solids. Now, when these molecules are the constituent particles, therefore, they are further subdivided into the three categories. Your first category in this case is non-polar molecular solids. Now, when we talk about the non-polar molecular solids, it means कि इसके अंदर whatever the atoms which are making, they all are the we say कि like for example the noble gases का case हो गया. Whatever the noble gases are there, their constituent particles, they are called as a non-polar molecular solids. Got it? नोबल गैसेस के केस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, दे आर गोइंग टू हैव द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. या फिर the molecules which are formed, they are formed by the non-polar covalent bonds. For example, hydrogen H2, Cl2, I2 का केस हो गया. So over here is what? There is no polarity between these. Therefore, they are called as a non-polar molecular solids. This point is clear or not? Noble gases and non-polar covalent bonds. मैम एक बार रिपीट कर दो. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कहीं पे भी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं है. अब ऐसा कब होता है? व्हेन यू आर हैविंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नोबल गैसेस, वन केस. सेकंड केस, you are having a covalent bond which is a non-polar in a nature. अब यहाँ पे when I am saying H2, it means that both are the HH molecule. दोनों की polarity same होगी, so there won't be existence of any kind of the negative or the positive charge. Therefore, this type of the molecules are going to called as a exhibiting a non-polar covalent bonds. तो जिनके पास भी non-polar covalent bonds होगा, they all are going to called as a non-polar molecular solids. Is it clear? Another point in this,
whatever the molecules which are having the which are called as a or which are coming under a category of a non-polar molecular solids, they all are going to have the weak dispersive forces, or you can say London forces. What are the London forces? जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। और कुछ इसके बारे में, लंदन फोर्सेस के बारे में? सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। Yes, basically you can say that it is a temporary attractive force जो दो adjacent electrons के बीच में होंगे और उनके बीच में एक temporary dipole होगा। Therefore इसको हम कुछ और भी बोलते हैं, एक और नाम भी देते हैं इसे। What is another? Dipole. हाँ बेटा, Dipole induced dipole. yes, very good. Dipole induced dipole. Okay, so this type of the force will exhibit in the non-polar molecular solids. Another thing, these type of solids are going to be the soft in nature. They are going to be the non-conductors of electricity. Then they are going to have the low melting points. Low melting points है, it means they exist as the liquid. मैम इसको हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्यों बोलते हैं मैम? इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, दो फॉर एग्जांपल ओवर हेयर एंड ओवर हेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर, तो क्या होगा कि इनके ऊपर जो इनकी पोजीशंस हैं उसकी वजह से टेम्परेरी डाइपोल्स आ जाते हैं। टेम्परेरी मैम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल तो वो कहते हैं जैसे मैम एक वो है, जैसे मैम सिंपल इलेक्ट्रॉन जैसे H का एक एटम है ना, तो अगर एक डायपोल, अगर अपन एक डायपोल चार्ज मतलब एक जो जिसके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड्स बने हुए हैं जिस डायपोल में है, उसको अगर उसके पास लाते हैं तो इसमें इंड्यूस होता है, तो वो कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो मैम वो तो पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है मोस्टली। नहीं नहीं नहीं, इसको भी नॉन पोलर वाले को भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप ये कह सकते हो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समटाइम व्हाट हैपेंस के उसके ऊपर टेम्परेरी चार्जेस आ जाते हैं, टेम्परेरी चार्जेस की वजह से इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल मतलब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। देखो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल जैसे अपन करते हैं तो हम उसमें तो ये होता है जैसे एक चार्ज पार्टिकल है उसको अपन उसके पास लेके आएंगे नॉन के पास, तो वो उन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स जो उन दोनों में होता है जैसे एक तो सिंपल मॉलिक्यूल में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नॉन पोलर के अंदर भी होगी ना बच्चे भाई। नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्स लगेगा हम उसमें, तो मैम ऐसे सिंपल बिल्कुल बहुत वीकेस्ट फोर्स होता है मैम, उसमें तो मूवमेंट थोड़ी होती है। नहीं, अट्रैक्शन तो हमेशा ही होगी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। से सपोज ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एक मिनट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये नेगेटिव यहाँ पे आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इज मूविंग ना, बिकॉज ऑफ विच इसके पास क्या आया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव रहा, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओनली। देयरफॉर because of this negative electron, or you can say because of distribution of this electron, a charge has came over here, therefore it is called as a induced dipole over here. मतलब पार्शियल चार्ज है ना। हाँ पार्शियल होता है, तभी तो मैंने बोला टेम्परेरी, आई यूज्ड अ वर्ड टेम्परेरी। फिर मैम वो तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो दूसरा नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन है इस पे भी पार्शियल चार्ज दूसरी साइड बनेगा। हाँ मतलब तो जैसे अगर ये तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मैंने बताया है, अब इसका जो है यहाँ पे पार्शियल बनेगा, फिर यहाँ पे अगर एक और हुआ तो यहाँ पे नहीं बना, इसका उस साइड बन गया, मतलब ये तो घूम इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करेगा ही, तो अगर उस साइड बन गया तो मैम इनमें रिपल्सिव फोर्स भी लग जाएगा फिर मैम। यस, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग टेम्परेरी फोर्स, टेम्परेरी चार्जेस।
कि ये परमानेंट नहीं होते। पोलर में तो व्हाट हैपेंस, पोलर के अंदर तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है। ओके यस मैम। now another point that we say that they are going to be soft, they are non conductors, they are low, having the low melting point, therefore they exist as the liquid or gas in the gaseous state at the room temperature and a standard pressure. Okay, now for today only this much we are going to do. Then tomorrow we are going to discuss with the remaining molecular solids. Now your homework is what?